check if the given matrix is singular. तो मैट्रिक्स सिंगुलर है नॉन सिंगुलर वो उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से पता चलेगा. सो लेट अस फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B. So determinant will be determinant of 5 minus 20 minus 4 and 16. अगर ये 0 आता है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा और 0 अगर नहीं है इसकी वैल्यू then it will be non-singular. Let us find its value. आएगा 5 into 16 5 into 16 माइनस इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट minus 20 into minus 4. So 5 into 16 ये हो जाता है 80 माइनस अब ये दो नेगेटिव टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा and 20 into 4 is 80. So this product is 80. So we have 80 minus 80 that is equal to 0. So determinant value 0 आया. So therefore we could say B is a singular matrix because its determinant value is 0.